Good morning, sir. Good morning, ma'am. कनिका एंड कीर्ति अपना वीडियो ऑन करिए बेटा. Kanika and Kirti, beta, please switch on your video. Okay. So we'll get started. It's time, so we will get started. Let the others join. So today we will complete this chapter on statistics. Okay. उसके बाद आपका जो कोर्स है टेक्निकली वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, राइट? वी विल देन स्टार्ट विद रिवीजन. ओके. तो we yesterday we did questions on standard mean deviation around the mean as well as around the median for ungrouped as well as group data. तो सबका हमने एक एक एग्जांपल लिया और वो किया. ठीक है. टुडे वी विल डू the type of questions we have in the standard deviation and variance. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन जिसमें हमें जो है मीन और वेरिएंस दो ही चीजें निकालनी है. ठीक है. स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डिविएशन, बट वो हमें निकालने को नहीं कहा गया है. ठीक है. तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ठीक है. सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या है. 2 + 4 6 + 7 13 Himanshu, Harsh, beta, switch 45 on your video. 25 50 40 is 40. Okay, the sum is 40. Okay, so this is what, this is not really group data, right? This is only frequency tabulated data. तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें निकालना है एक्स आई एफ आई. मीन निकालना है सबसे पहले, राइट? तो उसके लिए एक्स आई एफ आई निकालेंगे. So let's find that. This is 12, this is 40, 40, this is 98, 98, this will 18, 12, 192 9, and 112, 2 and this is 90. ठीक है. Now we have to first find the mean, right? तो मीन के लिए इन सबको ऐड करेंगे और 40 से डिवाइड करेंगे, राइट? सो मीन x bar is summation xi fi by summation fi. ठीक है. तो इनको ऐड कर लेते हैं. तो 52 152 366 Prashant, switch on your video, beta. 760, right? Okay. Yes, sir. Okay. So it will be 760 by 40. Sorry, 36.
19 is the mean. अब मीन निकाल लिया तो हमें क्या निकालना है? वेरिएंस निकालना है. वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस का एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं. Is the mean of square of deviations. राइट? तो इसका मतलब हमें पहले डिविएशंस निकालने. ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट द डिविएशंस. What are the deviations? 12 minus 19. Sorry, Minus 6 minus 19. 6 minus 6 minus 19. Okay, so which is minus 30. 30. Okay, and 10 minus 19 is minus 9, Minus 9. minus 5, and Minus minus 1. 1, and 5, 5. 9. 9. प्रशांत बेटा switch on your video. 12. आप देख नहीं रहे हो. Okay, now we have to find their squares. Actually, मैंने यहाँ पे fi नहीं लिखा. Right? So minus x square. So ये हो गया 169. All become positive numbers now. Okay. Now we have to multiply it with frequency. So frequencies are here. So 338. Sorry. 4. 24. 7 into 25 is 175. 12 into 1 is 12. 8 into 25 is 200. 4 into 81 is 324. And 3. Okay, now we have to add these up. Let's quickly do the addition. Huh. एक second, just hold on. Switch Huh? on your video, Just बेटा. yes, what did we get? Somebody got it? We are getting 1736. Okay, now Yes, sir. we have got everything we need, so we can find sigma square, which is 1736 by 40, which is 433. 43.4. Okay. So this was a simple question, right? If there was a standard deviation also to be found, then it is straightforward. Okay. This is the standard deviation. Okay, but in the question it was not asked. Okay. Now let's move on to a slightly different question. Find the mean, variance and standard deviation using the shortcut method. ठीक है, क्योंकि मीन और मीन में भी शॉर्टकट बहुत यूजफुल रहता है जैसा आपने देखा है, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने में एक्चुअली शॉर्टकट बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाता है, क्योंकि अदरवाइज द कैलकुलेशंस बिकम प्रीटी डिफिकल्ट
in the previous question, the numbers were simple, so we could do it. In this, the xi is also pretty big, okay, and it is in a decimal number, like 72.5 is the first class mark, okay, and then 77.5. The calculation is going to be a nightmare, okay. इसलिए हम क्या करेंगे? We will use the shortcut method even if it is not mentioned in the question. ठीक है ना, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है और वो ये नहीं लिखते हैं कि शॉर्टकट मेथड यूज करना है, तभी भी आप शॉर्टकट मेथड यूज करके ही फायदे में रहेंगे, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। सबसे पहले तो क्लास मार्क लिखना जरूरी है हमें, ठीक है, तो वो लिख लेते हैं 72.5, 77.5, 82.5। Okay. Now let's assume a mean. Okay, so कोई middle term हम use assume कर सकते हैं. Let's assume this one. Okay, so A जो है हमारा assumed mean is 92.5. Now 72 minus 92.5 will be our xi minus A. Prashant beta, mute your mic. Right, 72 minus 92.5 is minus 20. ठीक है ना। अब आगे तो जो क्लास इंटरवल के डिफरेंस है वही आता है, राइट। सो हमें बार बार एक्चुअली सब्ट्रैक्शन करना नहीं पड़ता है। तो ये -15 हो गया, -10 हो गया, -5 हो गया, 0, 5, 10, 15, 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? क्लास साइज से इसको डिवाइड भी कर देंगे, राइट। तो h क्या है हमारा? 5 है। So we will divide this by 5 and let's call that as yi. Okay, so our numbers will become even smaller to deal with. Okay, अब हमें कैसे, हम मीन तो कैसे निकालते हैं हमें पता ही है, राइट। हमें क्या क्या निकालना है? मीन। तो सबके ना एक बार फॉर्मूला कहीं लिख लेते हैं ताकि हमारी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाए, हमें याद रहे कि क्या क्या निकालना है। तो यहाँ पे छोटे छोटे फॉर्मूले लिख लेते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? शॉर्टकट मेथड से, स्टेप डिविएशन मेथड से मीन क्या होता है? We will add back the mean that we have subtracted. Assumed mean को ऐड करेंगे, ठीक है। और मीन ऑफ डिफरेंसेस जो है, राइट, वो कैसे है? fi yi, इसका मीन निकालेंगे into h। सर yi क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? yi is assumed mean से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डिफरेंस फ्रॉम, डिविएशन फ्रॉम assumed mean divided by the class size. ओके, सो assumed mean और क्लास साइज क्या स्टेप है, राइट। तो ये हमने क्या किया कि जैसे 20, 15, 20 है, उसको उसका एक्चुअली जो यूनिफॉर्म क्लास साइज के क्वेश्चन आते हैं यूजुअली, राइट। और अगर यूनिफॉर्म क्लास साइज है तो ये इनका कॉमन फैक्टर होगा ही हमेशा। तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं? कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन इट सो हैपेंस कि क्लास साइज यूनिफॉर्म होने की वजह से क्लास साइज ही उसका कन्वीनियंट कॉमन आई एम सॉरी, कन्वीनियंट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग लगाए बिना हम क्लास साइज से डिवाइड कर लेते हैं, वो इजी रहता है, ठीक है। तो ये स्टेप डाउन वर्जन ऑफ द डिविएशन है, बट ये रियल डिविएशन नहीं है, डिविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन है अभी तक।
और हम ये क्यों करते हैं, ये आपको अपने 10th से रिकॉल करना है। इसका नाम होता था स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, जो हमारे मीन निकालने के 3 मेथड्स थे, डायरेक्ट मेथड था, एज्यूम्ड मीन मेथड था, स्टेप डिविएशन मेथड था। तो ये स्टेप डिविएशन मेथड हम यूज कर रहे हैं। ओके, तो उस मेथड से ये हमारा मीन का फॉर्मूला होता है। फिर सर स्टेप डेविएशन का दूसरा नाम शॉर्टकट मेथड है। हाँ देखिए, स्टेप डिविएशन मेथड जो हम नेम यूज करते हैं वो मीन निकालने में यूज होता था। ठीक है, और बुक में जो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने में मेथड का नाम दिया है उसका नाम स्टेप डिविएशन नहीं है, उसका नाम है शॉर्टकट मेथड। अभी तक हम Saurabh beta and Himanshu, switch on your video. हिमांशु यू टू या ओके, ठीक है ना। तो देखिए स्टेप डिविएशन मेथड केवल मीन के लिए नाम था, और जब हम वेरिएंस निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे हैं, तो उस मेथड का नाम है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो अब 12th में वो जो नाम यूज, 11th में जो नाम यूज करेंगे आपके साथ, वो शॉर्टकट मेथड यूज होगा अगर एग्जाम में नाम आता है। ठीक है, बट इट इज बिल्ट ऑन द स्टेप डिविएशन मेथड, क्योंकि आप मीन तो उसी से निकालोगे। ठीक है, अब let's write the formula that we discussed, the shortcut formula for the variance. ठीक है ना, तो वेरिएंस का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर बाय n स्क्वायर। n क्या है, ये समेशन ऑफ fi। ठीक है, बट वो नोटेशन बुक में n दी हुई है, इस केस में तो मैं वही लिख रहा हूं, बुक वाली नोटेशन। ठीक है, आप इसको समेशन fi स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में n into sum of all the reduced deviations। तो उसका मतलब क्या हुआ, fi yi का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर केवल yi पे, माइनस fi yi, ठीक है, का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद करने में समय लगेगा, आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बोलकर याद करना मुश्किल है, आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूले में अच्छी बातें क्या हैं, इसमें जो बहुत अच्छी बात ये है कि ये फॉर्मूला पूरा का पूरा देखिए yi से ही सॉल्व हो जाएगा, हमें वापस xi पे नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, दूसरा इस फॉर्मूले में एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि a तो यूज ही नहीं हो रहा है, एज्यूम्ड मीन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमको यहाँ पे a ऐड बैक करना है, यहाँ वो भी नहीं करना है। ठीक है, तो इसका मतलब एज्यूम्ड मीन कोई भी हो, फॉर्मूला सेम ही रहता है। ओके, ये सब इसकी वजह से ये कैलकुलेशंस हमारे आसान हो जाते हैं। तो अब हमें नेक्स्ट चीज क्या निकालनी है, हमें fi yi निकालनी है एक चीज तो अभी। ठीक है ना, fi f ये है इंटू yi, एक तो ये निकालना है, एक हमें निकालना है yi स्क्वायर, और f सर n की रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैपिटल n ना, ये Yes, sir. हाँ, कैपिटल N इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। okay. ओके, टोटल नंबर विच इज सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। ओके, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, yi स्क्वायर निकाल लेते हैं, yi स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये आ गया हमारा 16 9 4 1 0 1 4। ठीक है, अब निकाल लेते हैं, यहां पे हमें चाहिए fi yi, तो fi yi निकाल लेते। ठीक है, आप हमेशा ये फॉर्मूले लिख लेना, फॉर्मूले लिखने के बाद फिर याद रहता है क्या क्या निकालना है। ठीक है, fi yi निकालना है,
तो ये हमारा yi है यहाँ और ये हमारा f है यहाँ, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है ये। ओके, सो ये आ गया -12, 4 into 9, 4, no, 4 into -3, -12 again, 7 into -2, -14, 7 into 1, 7, 15 into 0, so 9 into 1, 9, 6 into 2, 12, 6 into 3, 18, and 3 into 16, 3 into 4, sorry, 12. Okay, you have to do this really carefully, right? अब मीन निकालने के लिए इसको सम अप करना है, राइट? तो सम अप करके देख लेते हैं। So we are left with 16. So the sum So is, 7 minus का होगा just a second. सर, हाँ, तो 7 minus का होगा। हाँ, y माइनस होना चाहिए, राइट। ये यहाँ पे 7 into -1, so ये -7 होगा, right? So this will give me 4 -3. 6 आ गया, right? The sum is 6. तो हमारा मीन निकल आया। मीन क्या है? A is 92.5 plus 6 by the sum of all the frequencies. What is the sum of all the frequencies? 7, 21, 36, 60, right? Sum of all the frequencies, n is equal to 60 है हमारा. So 6 by 60 into the class interval, right, which is 5. So this is 0.5. So 93 आ गया. हमारा मीन आ गया 93. Okay. So mean we have found is 93. This is one of our answers. Now let's find, we need this, right? Fi yi square. So let's find that. So now this into this, 3 into 16, 48, 4 into 9 is 36. Himanshu, Kanika, beta switch on your video. 7 into 4 is 28. 7 into 1 is 7. This will be 0. So 9 into 1 is 9. 6 into 4 is 24. 6 into 9. 6 into 9, yes. 6 into 9 is 54. And 3 into 16 is 48. Now we have to sum this up. Okay. Kanika, switch on your video, beta.
right? So we have everything now we need. We will just put the values in this. Okay. So let me make a little bit more space somewhere. Okay, let's do that. H square is 25 by n square. N square is 16 to 60, right? Now n 60 into this sum of this, which is 254. Minus sum of this, which is 6 square. This is what we have to calculate. Okay. So what I will Kanika, switch on your video, beta. okay, so 1 by 24 into 2536. This is equal to 2536 by 24. 10.27, right? This is what it comes to. I've just calculated it using the calculator. Okay, obviously in the exam you can't use the calculator, so I'm just trying to save some time here. Okay, 105.7. Okay, and the standard deviation will be under root 105.7. Okay, you have to obviously solve that with the square root method. Okay, which will be slightly above 10. Got that? So this is the shortcut method. Usually you will have to use this method until unless the problem is very, very simple. Okay, if it is very simple problem, it will not be a good idea to use it. Otherwise, it is always helpful. Okay, this is one more question. Let's do this one more question and then we are done with this chapter. So we have to find the mean and the variance and the standard deviation, the same things we have to find. Okay, so how can we do that? What is the first thing we need to do here?
What is the first thing we have to do? Sir, class size. What is class size? Sir, sum of lower limit and upper limit by 2. Okay, that is class mark. It Oh, is sorry, called sir. class mark. Huh? So what will be the class? So is that the first thing we should do? Okay, let me give you a hint. There's a reason I have included this question, right? It's not, there's something different from the previous question. That is why I have included it. What is it that is different here? Sir, class continuous नहीं है. हाँ, और अगर आप इसको डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे इस क्वेश्चन को, तो पूरा आंसर आपका जो है फाइनली गलत आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपनी क्लासेस को, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है. 36, 37, 40, 41 1 का जंप है हर बार. हमें इसको कंटिन्यूअस बनाना है. 1 का जंप है हर बार, तो इसका मतलब 0.5 सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है. लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट, अपर लिमिट में ऐड. तो अब हमारे रिवाइज्ड क्लास साइजेस, ठीक है, वो लिखने हैं. तो क्या होंगे वो? 32.5 से 36.5, 6.5, 36 36.5, से 40.5, 40.5, 44.5, 44.5 to 48.5, 48.5 to 52.5. Okay, now we can write our class marks. Okay, so what is the class mark here? 30. अगर हम ये नहीं करते, अपनी रिवाइज्ड क्लास साइजेस नहीं लिखते, तो क्या चीज हमारी अलग हो जाती जिससे सब कुछ गलत हो जाता? क्या चीज हमारी गलत आती जिससे आगे की कैलकुलेशन गलत? क्या हमारे क्लास मार्क गलत होते? जब हम नॉन डिसकंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस बनाते हैं तो क्लास मार्क में कोई चेंज नहीं आता है. ओके